Okay, so today's topics is about on third unit we are going to see. So in this third unit, the chapter name is understanding open source ecosystem. So जो third unit है actually ये merge किया है आपका first and second units के points को means इन ओवरव्यू आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में जितने भी पॉइंट कवर किए हमने वही जस्ट अगेन यहाँ इस थर्ड यूनिट में रिपीट किया है सो जो भी पॉइंट्स हम लोग चेक करेंगे इज देयर सो वी हैव टू चेक राइट ओके so you know very well Linux and GNU we have studied in our second unit, right? What is Linux? Linux is a free software foundation, right? Linux and GNU. Linux एंड GNU. मैंने आपको बताया था कि GNU ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने हमने सेकंड यूनिट में स्टडी किया था. मतलब रिचर्ड स्टॉलमैन ने कैसे फ्री सॉफ्टवेयर को डेवलप किया थ्रू द GNU, राइट? सो ये हम लिनक्स क्या है, ये एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, लेट्स सी. लिनक्स इज अ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन was established by Richard Stallman. जो मैंने आपको अभी कहा ये वेट 1 मिनट. Okay, so okay, so we know very well कि free software foundation was established by Richard Stallman, right? GNU supplies and return multiple important Linux tools freely. Then GNU General Public License is distributed under the Linux. So the General Public License we have already seen the second unit, right? जो distributed हो रही है under the Linux. Linux is nothing but is a type of OS. जैसे कि अभी आप Windows 10 use करते हो, कोई Windows XP, you know very well this OS, right? Operating system. So Linux भी एक type की operating system है जहाँ पे GNU means General Public License is distributed under the Linux. Okay, it make mandatory for developers and slayers. मतलब ये developers के लिए बनाई गई है, right? GNU and Linux. Okay, then Linux is a strong enough in internet future as well as networking. Linux एक OS है जो कि नेटवर्किंग में भी यूजेबल है, मींस इजीली नेटवर्किंग में भी हेल्पिंग करती है. स्टोरेज दिस यू नो वेरी वेल कि हम ओएस के थ्रू वी कैन लिनक्स इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ इन इंटरनेट फ्यूचर एज वेल एज नेटवर्किंग. ओके, लिनक्स इज अ कैरी आउट at multiple location across the world at demand of the software foundation. Means Linux ये you can use the Linux through Linux based mobile also. Okay, so here mentioned that Linux is carry out at multiple location. In multiple location also you can carry out, means in India also you can use it. Location, multiple location you can use it. This OS, this which one? Linux. The most popular GNU Linux flavors include Red Hat. In short, you can say that GNU is oblique Linux. GNU and Linux is nothing but is similar. See, I given here oblique, right? सो मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर इसका कौन सा है, लिनक्स का या GNU? यू कैन से लिनक्स एंड GNU बोथ, कुछ भी आप नेम दे सकते हो उसको. मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर इंक्लूड रेड हैट. ओके, तो एक रेड हैट बोल के लिनक्स में आपको मिलेगा. जब यू विल स्टडी इन लिनक्स सब्जेक्ट देन यू विल गेट दिस रेड हैट. ये मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर है. जस्ट ये आपको अब इतना याद रखना है कि ओएस में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ने स्टडी किया. वी हैव स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट open source, free source, right? Software. So Linux is also type of OS which is freely available, right? Which is established by Richard Stallman. Okay, तो यहाँ पे जो रेड हैट है मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर है. इसका यूज आई थिंक सो यू विल सी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में भी. ओके, okay, it is a cost effective solution in setting up internet server or local internet. The most popular Linux flavor is Red Hat. Many software can be downloaded freely
फ्रॉम द इंटरनेट. यू नो वेरी वेल कि हम फ्री सोर्स में फर्स्ट अपने सब्जेक्ट में हमने यही देखा कि हाउ वी कैन डाउनलोड द एनी सॉफ्टवेयर राइट freely. That is a free course. Okay. Many software can be right. All the maximum declare of computer have committed to support Linux and multiple software. मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, okay, without OS, how you can use your computer, right? You require operating system. OS means operating system. So Linux also having that capability कि आप freely जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो कि वो easily डाउनलोड हो सकती है उस OS में, right? Because हमने देखा, okay. Then the version of GNU which is mostly used today is called the Linux. मतलब GNU is nothing but is similar. The version of GNU it is the version of Linux. Okay. Linux is normally used in combination with GNU operating system. Means Linux or GNU combination एक OS का. Okay. And we have studied already in second unit, right? Now explain the future of Linux. So exam में आपको आ सकता है कि futures of Linux. Okay. Futures of Linux. Okay. So it really does not matter about the version of Linux OS. You know very well कि version होता है हर operating system का. You know very well मोबाइल में भी version होता है. हाँ, version 1, 2, 3 जो भी मोबाइल होंगे. तो लिनक्स अभी XP था, फिर विंडोज 10 आया, फिर हर विंडोज के वर्जन चेंज होते गए. विंडोज 7 राइट. लाइक दिस लिनक्स में भी वर्जन्स होते हैं. ओके. It really does not matter about the version of Linux OS it used because the kernel is common in all the Linux OS system. Every Linux kernel can be offered the following feature. First is हर Linux जो kernel है, okay, वो क्या करता है? Following features exist करता है, like multitasking. Okay, multitasking. Then you can say multi-user. multitasking हो सकती है at a time. multi-user multitasking कर सकता है. Okay, multi-user. Then graphical GUI, graphical user interface, GUI. You can do it. This feature also there. Okay. Then hardware support is there. Hardware support. Okay. Then after hardware support, networking connectivity. You know कोई भी OS में आप networking भी connectivity करते हो. अभी when you type the anything, I'm typing here. So जो आपको show हो रहा है, so with the help of hardware, right? So here I mentioned that hardware support. Okay, then network connectivity, network connectivity. Just 1 minute. So network connectivity, hardware support and network server. Okay, it means कि network जो Linux के features है, right? So इसमें क्या है? मल्टीटास्किंग कर सकते हो. मतलब एट ए टाइम आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो आपके ओएस पर. देन मल्टीपल यूजर कैन यूज इट, राइट. देन GUI सपोर्ट है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर सपोर्टिंग. Okay, then network connectivity is there. Okay, so these are the features of Linux. Then following are the some popular Linux की distribution भी given है. if exam में आ सकता है आपको कि explain और in MCQ question अगर आते हैं तो what is the popular distribution of Linux? So some distribution is there. Just note down here. Linux distribution. Okay. So Linux distribution, first one is I said already, Red Hat is the most popular one, right? Then Ubuntu is there. Next one. Then Fedora. Okay. And Mandriva. Okay, these are the distribution of Linux. Okay, so
we have study about Linux futures, what is the futures of Linux and Linux distribution. Okay, now Android, you know very well, we have studied Android in our second unit maybe. So here also again point say repeat हुआ है third unit में, so we have to see in third unit में आपको हर एक point repeat हुआ है first and second unit का. So in overview हम लोगों को देखना होगा. Okay, 1 minute. Okay, so you know very well what is Android, right? Android you are using nowadays, right? So Android is a open source mobile operating system which is Linux based and developed by Open Handset Alliances, Google and other companies. मतलब एंड्रॉइड इज ये एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलायंसेस गूगल एंड अदर कंपनीज ने डेवलप किया है. ओके, एंड्रॉइड इज यूज फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर. यू नो वेरी वेरी आजकल जो भी आप लोग टैबलेट यूज कर रहे थे एंड्रॉइड वर्जन, देन कंप्यूटर सॉरी मोबाइल यू आर यूजिंग, राइट? Android mobile you are using, Android tablets. Okay, it's used for smartphones and tablet computers. In November 2007, Open Handset Alliances and other companies as well as Google device manufacturers like Sony, Samsung with the intention to develop open standard for mobile device. मतलब ये जो Android ये 2007 नवंबर में डेवलप हुआ. मतलब जैसे कि यू नो सैमसंग कंपनी, सोनी कंपनी, ये जितनी सारी कंपनीज इसने एंड्रॉइड हैंडसेट डेवलप करने का स्कीम स्टार्ट किया इन 2007 से. ओके, ओके, देन you can say in November 2007. Okay, then first version of Android, that is Android 1.0, was released in 2008. मतलब इन लोगों ने प्लानिंग की like Sony company, Samsung, alliances, Google, device manufacturers. मतलब जो device manufacture करती है वो कौन सी कंपनी होती है? Sony company device manufacture करती है. Device means your mobile, your tablet. Okay, it's called device also. So ये सारी डिवाइस जो मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं उसको हम लाइक सैमसंग, देन लावा कंपनी, देन सोनी कंपनी, बहुत सी कंपनीज है. बट सोनी और सैमसंग ये कंपनी का इंटेंशन था कि वो ओपन स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल डिवाइस को डेवलप करे. सो उन्होंने ये स्कीम इन नवंबर 2007 से स्टार्ट की. और द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड कब आया? 1.0 was released in the first version. Okay, the first version of Android, the first version of Android 1.0 was released in sorry, some network issues है. Okay, so जैसे कि मैंने आपको कहा कि Android 2007 में आया, right? First version sorry 2008 में आया, was released in 2008. Okay, then then Android 1.1 is released in Feb 2009. Month 1.1 is released in 1.1 release Android 1.1 is released
in 2009, like this 1.2, oh sorry, not 1.2, then after 1.5 is really 1.5, 1.5, that is curve. Okay, that is curve cake. ये एंड्रॉइड मोबाइल का नेम था 1.5 जो कब नेम से. ओके, सो ये वर्जन रिलीज हुआ अगेन 2009 में. ओके, जो 1.1 है ये फेब में रिलीज हुआ और ये जो कप केक है ये अप्रैल में हुआ. ओके, रिलीज. सो दिस फेब. ओके, एंड दिस अप्रैल. ओके, सो दिस मतलब वन से पहले रिलीज हुआ एंड्रॉइड 1.0 इन 2008 और 2009 में 1.1 एंड 1.5 रिलीज हुआ. ओके, दैट इज 1.1 इट इज अ रिलीज एंड 1.5 का नेम गिवन हुआ नोन एज अ कप केक. 1.5 को हम कप केक बोल के हुआ था जो कि 2009 में था. ओके, देन एंड्रॉइड 1.6 is known as do not known as this release in September 2009. मतलब 1.6 2009 में मोस्टली एंड्रॉइड वर्जन रिलीज हुए, राइट. सो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन किस ईयर में ज्यादा एंड्रॉइड की वर्जन रिलीज हुए. तो यू कैन से दैट 2009 में 3 वर्जन रिलीज हुए. विच वन दिस 1.1, 1.5, 1.6. सो 1.6 जो वर्जन था उसको is the name of 1.3 do not you can say do not not भी बोल सकते do not. that is in 2000 ये रिलीज हुआ सितंबर में 2009 में. ओके, ओके, सो ये 2.29 ये 1 minute. Okay, so ये point 1.1, 1.5, 1.6. This is a release in 2009. First one is a Feb, then April, and then September. Okay, then फिर एंड्रॉइड का 2 वर्जन आया जिसको हम इक्लेयर बोलते थे, राइट. वो भी अक्टूबर में, मतलब 2009 में मोस्टली रिलीज हुआ. 2009 में 4 वर्जन रिलीज हुए, 1.1, 1.5, 1.6 एंड 2.0, जिसको हमने नाम दिया था, क्या था, इक्लेयर. ओके, सो इक्लेयर नेम उस वर्जन का जो कि अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2009. ओके, तो 2009 में इतने वर्जन्स आपके रिलीज हुए एंड्रॉइड के. ओके, और एंड्रॉइड ये फर्स्ट वर्जन आया था 2008 में. देन 2010 में रिलीज हुआ 2. जो एंड्रॉइड 2.0 यू कैन से या 2.1. ओके, 2.1 also you can say 2.0. okay, then 2.2 it's known as a Furia, released in May 2010. Then 2.3 is known as a Gingerbread, is released in December 2010. And Android 3.0 is known as a Honeycomb, released in May 2011. It supports 3D desktop video chat and Gtalk. मतलब जो 3.0 वर्जन रिलीज हुआ, ओके, फिर वो किस किस को सपोर्ट करता था. इट सपोर्ट 3.0 इज नोन एज अ द वर्जन का नेम था ओके हनीकॉम सॉरी. ओके, जो सपोर्ट करता था इस सपोर्ट लाइक you can say 3D desktop, 3D desktop, then video chat, then Gtalk. ओके, जैसे व्हाट्सएप होता है इस टाइप का कोई Gtalk ऐप को ये सपोर्ट करता है. ओके, सो
ये 3.0 की मतलब ये हमने डिटेल अपने सेकंड में एंड्रॉइड व्हाट इज एंड्रॉइड मैंने आपको ईच एंड एवरी वर्जन के वर्जन एक्सप्लेन किया बताया इन अपने सेकंड 4 यूनिट में, फर्स्ट या सेकंड यूनिट में मे बी। ओके, अभी हमें देखना है एंड्रॉइड के फ्यूचर्स। यहाँ एंड्रॉइड फ्यूचर, एंड्रॉइड फ्यूचर्स, लेट्स सी। ओके, so Android के future first storage, you know very well. No need to explain. Then some points that we have to explain it. Storage, it uses lightweight relation database for data storage like SQLT. Then messaging. You know storage Android में होता है, right? Then messaging, it supports a text and MMS. Messaging में आप Android में text मैसेज कर सकते हो, mail send कर सकते हो, MMS कर सकते हो, right? Then storage message and multitasking you can do. Android में आप multitasking कर सकते हो, right? You can use WhatsApp, then you can use email also, right? Multitasking, Android support multitasking feature in which user can easily jump from one task to another task, and at some time various application can run simultaneously, right? Then multi-uses, multitasking, then multi-uses, multi language है, you know very well कि Android में multi languages होती है, right? So we are familiar with English and Hindi, so हम लोग वही choose करते हैं, right? So multi-language, it supports single direction as well as bi-direction text, right? Then Wi-Fi supporting that. It supports the future of Wi-Fi or technology that apps detect and pair directly over a high bandwidth peer-to-peer connection. Then web browser there, web browser. Okay, so as it is based on open source WebKit layout engine, also Chrome, V8, JavaScript engine, it supports HTML5 and CS3. मतलब you know मेरे Android में आप Google भी open कर सकते हो, web browser India. Okay, web browser. Then application of Android. Okay, features आपको समझ होगा, right? अब जा applications क्या है Android के, let's see application of Android. So Android application are developed of one or more application components like activities, service, and content providers. Means Android जो application है is developed of one or more application, right? Components like activities, services, and content providers. Each component play a different role. मतलब यहाँ पे कुछ components है, जैसे कि Android में कुछ components है like activities, then services, then activity, services, and providers. Okay, providers. ठीक है, so हर एक components उसके different role play करते हैं. Each component play a different role in overall application behavior, and each can be activated initially. It is a manifest file must declare all components in the application and also declare all application requirement. Okay, so activities होती है, services होती है, providers. Okay, ये application से अपनी Android की. Okay, now so here we have seen the Android में versions देखे हमने, right? Then storage, features, and this is the application. Okay, now BSD, you know, free BSD is a free Unix like OS system. In 1993, first version of BSD was released. And nowadays, FreeBSD is the most popularly used open source BSD distribution. FreeBSD maintain a complete operating system. Two main difference between Linux and FreeBSD are scope and licensing, that is project drivers, kernel, device drivers, and documentation. FreeBSD was developed in the University of California. The BSD project was founded in 1956 by Bill Joy. In 1992, Net2 was released after the William. Okay, and the new operating system called 386 BSD. So BSD is we have the first version of BSD was released on November 1993. So BSD ये हम लोगों ने already second में detail में देखा है, right?
So FreeBSD's use version type of scenario are follows, like uses, मतलब जो BSD की scenarios है जो follow किया, like uses, then servers, desktop, embedded system, मतलब server, desktop and embedded system ये uses है first. Okay, then networking. Okay, मतलब the free BSD use various type, मतलब किस किस टाइप में ये BSD यूज कर सकते हैं, नेटवर्क टाइप में, नेटवर्क टाइप. Okay, then storage purpose we can use it, right? Then security, then portability. Okay, so BSD किस किस वे में हम यूज कर सकते हैं. Okay, so first is the, I said, uses, right? The server free BSD contain uses में collection of server related software in the base system. It is possible to use the configuration free BSD, mail server, web server, firewall, FTP server, DNS server and router are the example of server uses. मतलब जो राउटर्स होते हैं आपके, राइट, जो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, एंड ये सारे एग्जांपल है यूजर्स के. इट इज पॉसिबल टू यूज कॉन्फ़िगर फ्री BSD. ओके, देन डेस्कटॉप हमने देखा. यूजेस के आफ्टर, इस यूजेस में पॉइंट्स है क्या यूज कर सकते हैं, इसके सर्वर्स, राइट, सर्वर्स कर सकते, फिर डेस्कटॉप, देन एम्बेडेड सिस्टम. ओके, so desktop में free BSD is available in the BSD ports collection. It does not install the X Windows system by default. No number of desktop environment are available to free BSD, like Genome, XFC, lightweight Windows managed like Open Box, Flubox, and DWM. Embedded system, it is mainly focused on x86 platform. FreeBSD also support others such as ARM, PowerPC, MIPS, and Laser Degree. Then networking. BSD में networking का use है, that's like FreeBSD also support IP6, then IP security and wireless networking. Okay, so networking, wireless networking में without wire, like जैसे कि आप लोग वाईफाई यूज करते हो, you no need to connect your wire, right? That is the security. These points are coming in networking, right? Then storage, soft update and use to protect the consistency of UFS file system. It takes snapshot of UFS file system at instance in time. Snapshot for allows reliable backup of live file system. From 7.0 onward, FreeBSD support the JFS file system. JFS was previously an open source file system. जो JFS है ये फिर पहले क्या थी, open source file system थी, was developed by Sun Microsystem. But when Oracle obtained Sun, then JF can become closed product. Okay, then security. Uh, Free BSD provide multiple security release features are, मतलब वो security provide करती है BSD, like access control list. Okay, security event auditing, extend file system attributes, then mandatory access control. Yeah, you can say media access control, then fine grained capability. The project was established by Robert Westron. His aim was the implementing concept from the common criteria for information technology security evolution of the on-range book. Many organizations are support to this project that are NSA Network Association laboratories. Okay, now this is the BSS related we have seen. Now open source hardware. So now we're going to see the open source hardware here. Okay, open
source hardware. Okay, open source hardware is also as open hardware from design information, electronics or computer hardware can be built that could be copyright or leased but has instead been made available for public uses at no charge. In this information, documentation, scheme, diagram, construction, detail, logic, design, and parts list are included. Open source can be applied on any information that grant to the people for modify, build, or update specification hardware such as personal computer, telecommunication, also computer peripheral. In hardware engineering, for design of hardware, some specialization software are available. To use that software is called as hardware description. Open source hardware we have studied in my second unit in detail. I have explained you, so here again repeat this point. That's why I'm just giving you an overview. If you don't know, then just go in second unit, check it, this video and study it. Okay. So again, we repeat why HDL we have seen open source hardware, how to use, how to perform the work of HDL, then CAD, right? सो ओपन सोर्स हार्डवेयर में सब ये पॉइंट कवर होते हैं ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज देखने वाले देन एडवांटेजेस ऑफ विजुअलाइजेशन देखेंगे देन डोकर दिस इज द पॉइंट्स and development tools then IDEs and debuggers. So ये फिर इसके बाद then programming language and LMP. ओके तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके थर्ड यूनिट में जो हम भी हैव टू सी और कुछ टू चीज वी गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल सो उसके बाद आपका फर्स्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ओवर हो जाएगा ओके कंप्लीट फिर वी हैविंग 4-5 lecture for this we require. Okay, so today's session is over here. Thank you.